constant fluctuations in oil and pump gas prices indicate the need to search for alternative energy sources such as water, sun, geothermal, wind, natural gas, and biomass to meet the country's fuel requirements. Being an agricultural country is rich in biomass, which is traditionally tapped as fuel source, particularly in the rural areas. One abundant biomass resource commonly used as fuel, owing to its high heating value, is the coconut or cocoa shell. It has been an ingredient in charcoal briquette production, along with the agroforest wastes, coffee bean hull, rice hull. Charcoal briquettes serve as household fuel in Europe, the US, and some Asian countries where hotels and restaurants use them for grilling and roasting. Entrepreneurs wishing to increase their production outputs can avail themselves of the mechanized briquetters. As an energy source, charcoal briquettes can replace a sizable amount of the expensive household fuel, LPG, kerosene, and electricity. They are also easy to ignite, slow burning, emit intense heat, and almost smokeless when burning. Aside from being a domestic and industrial fuel, charcoal briquettes can substitute for coal and coke in steel processing and in calcium carbide plants, lessen the country's dependence on imported fossil fuels, and are potential export material to the US, Europe, Japan, Korea, and Malaysia, where they are in demand. Continues to explore sustainable and efficient ways to utilize the country's wood and non-wood resources. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it.
If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. आपने जो बिल्कुल जदीद किस्म का ये जो आर्टिफिशियल कोयला तैयार किया है, इसकी क्या डिटेल है, कैसे आपको आइडिया आया और क्या किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ARY का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास आए और हमारे इस छोटे से सेटअप को डिस्क्लोज किया। और इसमें ये है कि सबसे पहले जो हमें आइडिया आया वो ऑब्वियसली यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहीं से ही हमें आइडिया आया और वहाँ से ही हम लोग आइडिया लेके यहाँ पे पाकिस्तान में। और कोविड था, फ्री भी थे, तो फिर मैंने सोचा चले इस पर वर्किंग की जाए। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोडक्ट जो है वो बना ली और उसके बाद फिर हमने इसको टेस्ट किया। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे, स्मोकलेस था, स्पार्कलेस था, ओडोरलेस था, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्वालिटीज़ थी। उसके बाद फिर हमारे साथ अटैच हुए साहब, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उसके तवज्जुह से हमने ये छोटा सा एक सेटअप तैयार किया जिससे हम पाकिस्तान में छोटे से पैमाने पर काम शुरू कर रहे हैं। और इस पर जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को भी कोयला जो है वो ये हम लोग दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि जितनी यहाँ पे कंजम्पशन है कोयले की, हमारी उतनी प्रोडक्शन नहीं है। हम अगर सपोज दैट एक कंपनी को भी पूरा कोयला देना चाहें ना, तो वो भी हम किसी एक कंपनी को भी पूरा नहीं सही तरीके से कर सकते। तो हमारी बस यही है कि हम इस पर मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं किसी तरीके से कि इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। कैसे एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान में ही अगर देखा जाए तो कोयले की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। और ये कोयला बन कैसे रहा है, मेन जो चीज़ है, ये बन कैसे रहा है, किस चीज़ से बन रहा है? ये एक वेस्टेज से बन रहा है। वो वेस्ट जो लोग ज़ाया कर देते हैं, जिससे माहौल ख़राब होता है, डस्टी होता है और पोल्यूशन फैलती है, हम उस चीज़ को इस्तेमाल करके, उस चीज़ को यूटिलाइज करके हम ये कोयला तैयार कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान भी साफ होगा और एनवायरनमेंट भी साफ होगा। और दूसरा ये है कि जो दरख्त काटे जाते हैं, उन दरख्तों की कटाई में जितना कोयला इस्तेमाल हो रहा है, जितने दरख्त काटे जा रहे हैं, ये सिर्फ कोयले के पर्पज़ के लिए, बारबेक्यू के पर्पज़ के लिए, तो इनकी कटाई भी कम होगी, माहौल में जो है सुधार आएगा। तो हमारा सिर्फ ये मकसद है और इसमें हम लोग जो है मज़ीद हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें जो इंडस्ट्री में हाई लेवल पे कोयला जो हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई हीट चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक कोयला तैयार किया है रिसेंटली, जो कि इंडस्ट्री में चलेगा और बॉयलर्स में चलेगा, स्टीमर्स में चलेगा, भट्टों पे तो चल ही रहा है। तो इन चीज़ों वहाँ पे भी जो है ये कोयला चलेगा। तो क्या इसमें आपकी खसूसियत क्या है कि आया जो ड्यूरेशन है जलने की, इसकी आम कोयले से ज़्यादा है, उसके अलावा कास्ट का कितना डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये आम कोयले से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा चलता है। और इसका जो प्राइस के हवाले से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो प्राइस में भी जो है ये तकरीबन 30 to 40% ये सस्ता है दूसरे कोयले से। जी, और आप क्या मैसेज देंगे हुकूमत सरपरस्ती करे अपने मसाइल? जी बिल्कुल, ये तो मैसेज हमने अपने देते रहते हैं अक्सर। वैसे तो आपके तवसल से भी हम लोग ये रेफरेंस देना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे और हमें सपोर्ट करे, तो हम पाकिस्तान पूरी दुनिया के जो पूरी वर्ल्ड लेवल पे हम इसको कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है।